Okay, fine. So we are beginning with Romanticism, the Romantic period, 1798 to 1824, tentatively. This is the age of revolutions. So the first thing in it is the French Revolution that has already been discussed. French Revolution was affecting this age, but at the same time, Industrial Revolution that started around 1740. So Industrial Revolution was a key motivator, and Romanticism is the outproduct, or you can say it is a product of Industrial Revolution. So first of all, what was Industrial Revolution? Industrial Revolution was a revolution. You can find a detailed video on that in my playlists of history. Industrial Revolution was a revolution which came to England when England had so much of capital that it won from so many countries. Like we know, it has always been the queen of seas, and it went all over the world during Renaissance. Many new parts of words, they were discovered. So in discoveries ke saath, what happened is England got their capital and maximum जो resources थे, England और English people उसको खींच के अपने मुल्क में लाए, ट्रेड शुरू की, उनको अपना माल दिया, उससे पैसा आया. So बहुत ज़्यादा पैसा था, तो क्या किया जाए इस पैसे का? So they thought to develop industry. हमने पढ़ा पीछे के रॉयल सोसाइटी बन गई जिसने साइंटिफिक इन्वेंशंस पे काम किया. जो एनलाइटनमेंट का टाइम था उसमें मजीद साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, एंड ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसका रिजल्ट था. सो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई, व्हील बना, दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया, व्हील से फैक्ट्रीज के पुर्जे बने, और एक ना ख़त्म होने वाली जो एक साइंटिफिक इन्वेंशंस थी, दे केम टू द वर्ल्ड. और अब उन इन्वेंशंस में क्या था कि जो इंडस्ट्री बेसिकली पहले लोग हाथों से काम करते थे, यानी जो हैंडी वर्क्स से, दे केम टू एन एंड. अब फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जिसमें काम करने वाले 10 लोग हैं जो कि 1 घंटे में एक थान कपड़े का बनाते हैं, तो वही काम मशीन ने शुरू कर दिया जिसने उस 1 घंटे में 10 थान बनाने शुरू कर दिए. तो इवेंचुअली 9 people out of 10 were out of job. The remaining one, he was taking care of the machine. So he was a supervisor of machine, जो कि मशीन को देख रहा था और काम सारा मशीन कर रही थी. रिजल्ट क्या निकला कि वो जो 9 लोग जॉब से बाहर हुए, उन्हें फिर अपने घर का राशन चलाने के लिए, घर का काम काज देखने के लिए और जॉब्स करनी पड़ी, और उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी पड़ी. सो ऑल द डे, ऑल द इवनिंग दे वर आउटसाइड, दे वर वर्किंग. तो फैमिली लाइफ जो थी वो खत्म हो गई. जब फैमिली लाइफ खत्म हुई तो उसमें उनका एक डोमेस्टिक जो एक कंसंट्रेशन होती है वो खत्म हो गई. विलियम डेविस की जो पोम पढ़ते हैं, ले है, दैट इज अबाउट दिस थिंग कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम रुकें, ब्यूटी को देखें, दुनिया को देखें, नेचर को देखें. सो लोग एक बिल्कुल मैकेनिकल लाइफ बन गई, रोबोट्स बन गए, नफ्सा नफ्सी छा गई, हर बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम करता था. सो यू आर गोइंग आउट इन द मॉर्निंग, यू कमिंग बैक, यू गोइंग टू अनदर जॉब, देन यू आर कमिंग बैक, यू स्लीपिंग, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू the job again. So this was a continuous practice, it was a persistent practice in those days. तो इंसान की जो लाइफ थी उसके अंदर से ये ट्रैवलिंग, नेचर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके थे. So out of these came these poets of romanticism. इन्होंने आके इस चीज पे फोकस किया कि इंसान जो है नेचर से दूर जा रहा है, इंसान के पास टाइम नहीं है, इंसान दुनिया की इस भागम दौड़ में बिल्कुल फंस चुका है. सो इन लोगों ने एक डिफरेंट किस्म की फिलॉसफी मुतारिफ कराई. सो रोमांटिसिज्म, also known as Romantic era, was an artistic, literary, and musical and intellectual movement. So this was an intellectual movement which was originated in Europe towards the end of 18th century, and in most areas was at its peak in the approximate period from 1800 to 1890. So इसमें ये पूरे यूरोप को इसने engulf कर लिया था. Onwards, the writers say
they took care of what was happening in the world affairs, and William Blake's affirmation in 1793 that a new heaven is begun. So Blake ने already कह दिया था कि एक नया सिलसिला start हो चुका है, and was matched by a generation later by Shelley, जिसने कहा कि world's great age begins anew, यानी दुनिया बिल्कुल एक तरह से एक नई दुनिया में कदम रख रही है. And these will give the word another heart and another pulse. ये John Keats ने कहा. So this is referred to that intellectual change and also the industrial change in Europe, especially in England. So Europe जो था most of the time engulfed था wars में, early 1800s में Napoleon wars चल रही थी. Society जो थी वो gradually change हो रही थी. Agricultural से industrial हो रही थी. Like you have seen many places within Lahore, जो किसी ज़माने में देहात होते थे, अब वहाँ पे अपार्टमेंट्स बने. So इस तरह क्विक शिफ्ट आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद के जो एग्रीकल्चर एरिया थे, एग्रीकल्चर वहाँ पे फैक्ट्रीज बन गई. जो सोल्जर्स थे जिन्होंने नेपोलियन वॉर्स में और दूसरी वॉर्स में लड़ा, यू नो कि उस जमाने में सोल्जर सिर्फ वो नहीं होते जो कि पर्टिकुलरली आर्मी का हिस्सा थे, वॉलंटियर सोल्जर्स भी बहुत सारे होते थे. सो वॉलंटियर सोल्जर्स जब वापस आते हैं तो उनके पास करने को कुछ नहीं था, क्योंकि दे न्यू एग्रीकल्चर वाज देन एंडेड ऑलमोस्ट, उसको रिप्लेस कर लिए थे इंडस्ट्री ने. सो बहुत सारे लोग उस टाइम में अनएम्प्लॉयड हो गए. जब ये मूवमेंट आती है तो दे फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म. नाउ एज फार एज ऑल द रोमांटिक पोएट्स आर कंसर्न्ड, ये सारे उनके कॉमन थीम्स हैं, लेकिन हर एक पोएट का एक अपना एक ट्रेट भी है, पर्सनल ट्रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है. ये इसी तरह के अगर मुल्क में 1965 की वॉर चल रही है तो हर बंदा पैट्रियोटिज्म के बारे में लिख रहा है, लेकिन हर एक बंदे की एक अपनी एक यानी एक ये इम्पर्सनल लेवल है, एक उसका पर्सनल लेवल भी है, तो जिसमें वो अपने जात के दुख या कुछ भी लिख सकता है. सो इसी तरह ये जो थीम्स हैं ये इम्पर्सनल थीम्स से, लेकिन इनमें से कुछ थीम ऐसे थे जो कि इन पोइट्स के पर्सनल थीम्स थे जिन पे उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी. सो इंडिविजुअलिज्म लाइक गिविंग इंपॉर्टेंस टू मैन एंड अ सिंगल पर्सन, जिसमें सिर्फ आप अपर क्लास नहीं बल्कि गांव में रहने वाली एक छोटी सी लूसी ग्रे, उसके बारे में भी बात करते हो, उसकी परेशानियों को लिखते हो. हम सिर्फ अरिस्टोक्रेसी से कंसेंट नहीं है. सो इंडिविजुअलिज्म पे जोर दिया गया. वो जो सोसाइटल बॉन्डेजेस थी वो ब्रेक हुई. नेचर एंड आर्ट विच वाज लॉन्ग निग्लेक्टेड, एनलाइटनमेंट एरा के बाद से लेके रोमांटिसिज्म तक, देयर इज नो थॉट अबाउट नेचर एनीवेयर. नेचर को, आर्ट को तो फिर भी देखा गया इन इटली इन शेप ऑफ लाइक द आर्टिस्ट, यानी जो ड्राइंग या पेंटिंग, लेकिन नेचर को लोग भूल गए. सो ये इन्होंने नेचर को और आर्ट को दोबारा से रिवाइव किया, इसकी इंपॉर्टेंस बताई इंसान के लिए. देन एस्केपिज्म वाज देयर कि इफ यू कैन नॉट go and embrace the nature, then at least you can have escape through your imagination. So escapism was developed in this age, then reaction to industrial revolution के लोगों ने, इन poets ने, especially Wordsworth ने, एक अपने दुख का इजहार किया, गम का इजहार किया. when he's standing on the Westminster Bridge and he's looking at the factories जो कुछ देर में धुआं निकालना शुरू कर देंगी, so वो इन चीजों पे कोड़ता था. So he was against this idea of industrial revolution. Then contrast to enlightenment. Enlightenment में क्या था बेसिकली कि तरक्की तो हो रही थी और इस चीजों पे काम तो कर रहे थे, लेकिन they were focusing more on superiority of knowledge and better writing style. यहाँ पे आके थोड़ा सा उसके अंदर चेंज आई कि वो थोड़ा सा इसमें फीलिंग्स को डेवलप किया गया. फैंसी एंड इमेजिनेशन, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया. कॉलेज वर्कड ऑन दिस. कीट्स इमेजिनेशन का एक लाइक बादशाह है, मैं उसे कहूंगा. सो इमेजिनेशन वाज देयर विद दीज रोमांटिक पोएट्स. सुपरनैचुरल एंड गॉथिक एलिमेंट्स ये बहुत इससे पहले यूज नहीं किए जाते थे इतने जितने के इस पोइट्री में यूज हुए, क्योंकि दे वर आल्सो पार्ट ऑफ
imagination. Diction जो थी, diction also suffered a change. Diction classical age में, इससे पहले Enlightenment की age में काफी diction पे काम किया जाता था, language पे बड़ा जोर दिया जाता था in prose और poetry. लेकिन यहाँ पे Wordsworth जिससे कहता है कि poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. So spontaneous overflow जो कि जिसमें आप फिर अब कैद नहीं हो डिक्शन के वाले से, जो आपके माइंड में जैसे आ रहा है आप उसे लिखते जा रहे हो. सो दीज वर द कॉमन थीम्स फॉर द रोमांटिक पोइट्स. फीलिंग जो थी, फीलिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. जो रॉबर्ट बर्न्स जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी फाइनेस्ट पोम्स के अंदर फीलिंग को डिस्कस किया गया. वाज इन सम वे कंट्रीब्यूशन और कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी. And it is worth remembering that Alexander Pope praised his father as having known no language but the language of heart. वो अपने बाप के बारे में कहता है कि उसे कोई ज्यादा जुबानें बोलनी नहीं आती, लेकिन वो दिल की जुबान बोलता है, दिल की जुबान समझता है. But feeling had begun to receive particular emphasis and is found in most of the romantic definitions of poetry. Romanticism में आके we are more concerned about those feelings, कि वो जो फीलिंग्स हैं विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, उनका क्या रोल है. रोमांटिक्स उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं. वर्ड्सवर्थ जो है उसने अपनी डेफिनेशन दी पोइट्री के बारे में. एंड इन 1833 जॉन स्टुअर्ट मिल डिफाइंड पोइट्री एज अ फीलिंग itself implying thought only as a medium of its utterance. Like जो कि पोइट्स नहीं भी थे, they were believing in this thing कि feeling के बगैर poetry impossible है. So feeling and intensity of feeling, it was expressed and it was almost there. For Augustans, feelings and imaginations were dangerous. They did not believe in them. And for Romantics, reason and intellect were dangerous. Augustans जो थे वो बिलीव करते थे रीजन्स पे और इंटेलेक्ट पे. रोमांटिक्स बिलीव करते थे फीलिंग्स पे और इमेजिनेशन पे, यानी वाइस वर्सा. वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज ये पोइटिक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे. दे वांटेड टू राइट पोइट्री, बट वो पोइट्री जो कि इनके प्रेडिसेसर्स थे बिल्कुल डिफरेंट हो. द गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक दिस इंडिविजुअल स्पिरिट ऑन विच रोमांटिक्स फोकस्ड. तो गवर्नमेंट क्योंकि एक सोसाइटल एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप सोसाइटी और इंडिविजुअल का हमेशा आपस में इख्तलाफ रहा है. सो गवर्नमेंट को ये आइडियाज नहीं पसंद आए, लेकिन पब्लिकली दे वर फेमस. अब जो क्योंकि गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक द आइडिया, सो मेनी राइटर्स वेंट अब्रॉड एज दिस स्पिरिट वाज टू डेंजरस. कई लोगों को मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जला वतन होना पड़ा, क्योंकि ये स्पिरिट किसी हद तक डेंजरस भी था. The movement was named Romanticism later on when people agreed with the concept of liberty and individualism. जब तक ये लोग मौजूद थे romantic poets, तब इस movement का नाम Romanticism नहीं था. It developed later on, जब लोगों को liberty और individualism की अहमियत पता चली. Revolt started by 18th century poets against classical school was now in climax. 18th century में भी classical school के खिलाफ एक revolt हो चुकी थी, जो कि अब climax पे थी. And the simplicity of language was encouraged. और अब language के अंदर जो simplicity थी उससे बहुत ज्यादा encourage किया गया. अब जो ये है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, romantics in poetry. So जो first part है हमारे पास lake poets हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, सदे है, उसके साथ डॉर्थी वर्ड्सवर्थ जो कि एक ऑक्सिलरी मेंबर के तौर पे थी. She was sister of Wordsworth and a friend to all. और तो ये एक हेल्पिंग मेंबर थी. तो ये जो 3-4 लोग थे ये लेक पोइट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनका ताल्लुक एक एरिया से था. They were almost neighbor to each other and they were feeling the same pain. So Wordsworth, first of all, he was called poet of nature, prophet of nature, a pantheist and philosophical poet. Poet of nature, prophet of nature को तो आपको पता है कि he talked about nature और वो nature को बहुत ज्यादा चाहता था. नेचर उसकी poems हैं ही सारी nature के बारे में. Pantheism है कि when you see depiction of God in something. So Wordsworth saw the depiction of God in nature. वो nature में God की depiction देखता है.
वो नेचर के अंदर माँ को भी देखता है, वो नेचर में गॉड को भी देखता है। अगर आपने इसकी प्रील्यूड पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफिकल पोम, इसका हम जिक्र करेंगे, सो उस पोम में ये बेसिकली अपने इंसिडेंट्स लिखता है बचपन के, एंड ही टेल्स कि वंस ही हैपन टू स्टील अ बोट, और उस बोट को लेके जा रहा होता है तो अचानक एक पहाड़ उसके सामने आ जाता है मोड़ काटने के बाद। पहाड़ तो वहीं पे होता है, लेकिन वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि वो पहाड़ अचानक खड़ा हो गया उसके सामने और वो उसे डांट रहा है, जिस तरह एक माँ डांटती है कि एक बच्चा चोरी करे। तो वर्ड्सवर्थ कहता है मैं डरता हुआ वापस आया और मैंने बोट को बांध दिया। तो ये एक तरह से कहता है कि जैसा माँ अच्छे काम पे बुरे काम पे डांटती है, अच्छे काम पे प्यार करती है, तो नेचर भी कभी गुस्से में है, कभी और मोस्टली बेनेवलेंट है। गॉड को देखता है वो नेचर में, नेचर उसे अपने खुदा के करीब करती है, सो ये उसका पैंथेइज्म है। फिलोसॉफिकल पोएट है because in many of his poems, especially Ode on Intimation to Immortality and lines composed a few miles away from West Trentford Abbey, so वहाँ पे ये अपने उस फिलोसफी को जाहिर करता है कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले मेरी थॉट्स और थी, अब मेरी थॉट्स डिफरेंट हो चुकी हैं, मेच्योर हो चुकी हैं। नेचर एक बाम की तरह है, जब मैं यहाँ पे होता हूँ वो मुझे क्योर करता है, जब मैं लंदन में होता हूँ मैं ये बाम अपनी इमेजिनेशन में इकट्ठा करके ले जाता हूँ और ये मुझे वहां पे मरहम लगाता है। सो ही काइंड ऑफ यूज फिलोसॉफिकल टर्म्स। लिरिकल बैलेड्स इसने लिखे जो कि इसके साथ कॉलरिज था, ये दोनों मिलके 1798। देन कम्स प्रील्यूड जो कि एक बहुत लेंथी पोम है, एंड इट इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल पोम। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आता है 1801 में, फिर ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टेंटन अबे, एंड सो मेनी लिरिक्स, ओड्स एंड सोनेट्स। सो इट इज हार्ड टू से कि वर्ड्सवर्थ की सारी पोम्स के नाम हमें आते हो। ही रोट इन अबंडेंस, लेकिन ये उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क्स हैं। Then Coleridge, who was a friend of Wordsworth, a critic of Wordsworth, a companion of him, he again shared all those thoughts. Wordsworth ने भी नेचर के वो सारे स्पिरिट्स को फोकस किया जो कि रोमांटिसिज्म के स्पिरिट्स थे, लेकिन Wordsworth was more concerned about nature. In the same way, Coleridge was fulfilling all the objects or all the elements of Romanticism, but he was more a poet of supernatural. So he talked about supernatural beings, supernatural machinery. He used imagination to that abundance कि उसने उस चीज को ऐसे लिखा कि it was a suspension of disbelief. Suspension of disbelief in a way कि एक चीज जो हमें पता कि हो नहीं सकती, लेकिन उसको लिख इस तरह रहा है कि हम मजबूर हो जाते हैं उसे मानने के लिए। Coleridge was having a lack of willpower and he suffered from opium addiction. शायद इस वजह से वो इतने हाल मार्क्स ना लिख सका लिटरेचर में, पोइट्री में, लेकिन स्टिल जो उसने लिखा it was best of the best work by him. Lyrical ballads, then Biographia Literaria, which was a kind of critical commentary. And Christabel, it was a fragment, not a complete poem. It was based on supernatural elements. Rhyme on the Ancient Mariner was his best poem ever. And there's a famous quote from that line that the protagonist says that water everywhere, not a drop to drink. When they're sailing on an ocean, तो समुद्र पे तैर है, वो कह रहे पानी हर जगह पे, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उससे पिया नहीं जा सकता। सो रेपिटेशन उसने यूज की, लेकिन कमाल की लाइंस बोली। कुबला खान उसने लिखी 1816 में। दिस इज ऑल्सो फ्रैगमेंट, जिसके बारे में मशहूर है कि he was writing and then when he was done writing this much which is in front of us, then suddenly his some friend knocked at the door and this broke his imagination and he could not complete the poem. So this is height of his thinking and imagination. ये imagination आज से पहले नहीं थी। Then France an ode, Dejection an ode, which was written by them. So imagination is a powerful tool. I still remember there was a group of people who were caged there, imprisoned somewhere. उनमें सब लोगों को तन्हाई में रखा गया,
एक काफी सालों तक वो सब पागल हो गए सिवाय एक बंदे के जो कि टीचर था। तो वो इसलिए पागल नहीं हुआ कि वो टीचर था, वो इसलिए पागल नहीं हुआ क्योंकि वो उसने एक इमेजिनेशन में क्लास बनाई हुई थी। वो रोज एक रोल कॉल लेता, इमेजिनेशन में लेक्चर्स देता, तब लोगों को लगता होगा कि ये पागल है, लेकिन वो उस अपने इमेजिनेशन की वजह से बच गया। So these romantics used imagination even when they were sitting in the tiresome and troublesome life of London. Then he was a voracious reader, Robert Southey, not as good as Wordsworth and Coleridge, but he was a voluminous prose writer. बहुत ज़्यादा काम था इसका prose में, poetry इसने थोड़ी की, लेकिन again that was not as good as the works of Wordsworth. ये इसके वर्क्स हैं, गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स जो कि बच्चों के हवाले से है, Thalaba the Destroyer, The Life of Nelson. So these were the poems that were written by Robert Southey. Then comes the Scott group. So the Scott group, it is by Sir Walter Scott, Thomas Campbell, and Thomas More. So these three were together almost, and they were writing things. So Walter Scott was a Scottish playwright, a poet, novelist, and historian. So his history books are very famous. इसने रोमांटिक पोइट्री को कॉमन किया आम लोगों में। इसने उन since he was having a dashing personality, तो ये इसकी पोइट्री को बहुत ज्यादा फेम मिला। कुछ इसकी जो पोम्स थी वो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज से ज्यादा मशहूर हुई, और although इसका प्रोज, रोमांस एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स वो इसकी मेजर स्पेशलिटी थी, लेकिन इसने जितना पोइट्री पे काम किया, because of his personality, his outlook, his style of speaking, तो इसकी पोम्स को वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की पोम्स के मुकाबले में ज्यादा फेम मिला उस टाइम में। मैरिमन, लेडी ऑफ द लेक, द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, रॉक्ड बाय, so these were the famous works by Walter Scott. Then comes the younger group. So this younger group contains Lord Byron, Shelley, and John Keats. So John Keats is known for his imagination and beauty, but the thing begins with Byron in that later group. He was the most popular in his time due to his personality and glamour of his career. His poetry was not as good as that of Shelley and Keats, but he was like a good poet. He traveled widely across England, across Europe. He was exiled, and his best poetry was written in exile. So the beginning of his poetic career was not that good, but later career was very good. He was a revolutionary because that's why he was exiled, because he took part in a Greek War of Independence. So he was a radical person like Shelley and had radical ideas. Don John is the most popular work by him, and then Childe Harold's Pilgrimage and Ken to the Fourth, which was written later on. So these are the important works and details by George Gordon Byron, primarily known as George Byron or Lord Byron. Then comes Shelley. So Shelley was son and singer of revolution. So he was, since his childhood, a radical person, a rebel, very much interested in different kind of ideas, radical ideas. He was the greatest lyrical and philosophical poet. And because of his philosophy, he was alleged as an atheist because people could not understand his works. His hymn to intellectual beauty, in which he says he calls the religion as frail spells. But he's not taunting the religion itself, he's taunting the practices of religion, which was misunderstood by people, and they called him atheist. Otherwise, hymn to intellectual beauty is a complete hymn. पूरी हमद है वो, आप उसे अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यानी खुदा की शान में इससे खूबसूरत इंग्लिश में वर्क शायद ही आपने पढ़ा। So he was a radical in his poetry, in his views,
and even his radical writings influenced Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., who came later on. So वो अपने अपने एरियाज में इससे बहुत ज़्यादा influence से. Shelley had a very good career. He was a good person, belonged to a well and rich family. लेकिन ये इसके like a child की death के बाद he was too dejected, and then very soon in his life, like बहुत ही young age में, almost 30 years, वो डूब गया एक कश्ती से सफर करते हुए. So it was an unfortunate incident, and it was an accident and a tragedy for English literature. So Ozymandias was his most famous work, then Ode to the West Wind, which जिसमें Ozymandias, he talks about the life of a person who was once king, but now a skull which is broken by the foot of a small pedestrian. Ode to the West Wind is about revolution. He talks about revolution in the West Wind. He makes West Wind as a symbol of revolution. तो बताता रहा कि वेस्ट विंड जो है वो जिस तरह एक्टिव है और शेली पैसिव हो चुका है, तो कहता है कि रेवोल्यूशन भी एक्टिव है और मैं पैसिव हूं, तो मुझे ये एक्टिव करे अपने साथ, जिस तरह वेस्ट विंड डेड लीव्स को अपने साथ उड़ा लेती है. Adonius, which was written about Keats, an elegy after his death. A Queen Mab, to a Skylark. To a Skylark is full of similes and metaphors. So all his writings are worth reading. Then John Keats. So he was the best of the best romantic poets. He was the poet of beauty. So he was into nature, he was into imagination, he was into escapism, all those elements. Individual के बारे में भी इसने लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा he talked about the beauty of nature. सबसे ज़्यादा ये nature की beauty के बारे में बात करता था. The beauty that is permanent, the beauty that is everlasting. A thing of beauty is joy forever, was said by him. Keats was the most imaginative poet. वो अर्न को देखता है तो वो उसकी दुनिया में चला जाता है, वो नाइटिंगेल की आवाज को सुनता है तो उसकी दुनिया में चला जाता है. His sensuousness is popular because in his imagination he's not only in the word of nightingale, but he's listening to the sound, he's touching the things, he's smelling, he's tasting hemlock or telling the taste of hemlock. So वो अपनी 5 senses को भी use कर रहा होता है. Keats is an escapist. He wants to get rid of the world. जहाँ पे फैनी ब्राउन उसकी जो beloved थी, जिसका दुख इसको हमेशा रहा, फिर इसका भाई जो कि यंग एज में टीबी की वजह से मर गया. Keats himself died of tuberculosis. So both और poverty अपनी जगह पे थी. So he was fighting so many issues. So he wanted to escape this miserable world. वो दूर जाना चाहता था इससे through imagination. And then Hellenist. He was great in love with Greek mythology. उसकी बहुत सारी poems भी उस पे based हैं, या poems के अंदर उसके references हैं, and he talks about Greek culture, Greek traditions, especially in Ode on a Grecian urn, Ode to a Nightingale में भी Greek references को वो लेके आता है. So ये romantics की मोहब्बत थी Greek literature के बारे में, जिसको ये frequently quote करते थे. And to me, if you do not know Greek mythology, you are unable to understand Romanticism. Ode to a Nightingale, La Belle Dame and Marcy, Ode on a Grecian urn, Ode on melancholy, Ode to Psyche, Ode to autumn, Endymion, Lamia, Hyperion, the fall of Hyperion, which was a dream. So last 4 poems are specifically Hellenist poems, which are based on the Greek myths. Ode to Psyche is also on Greek myth because Psyche is goddess. So to understand romantics, you need to understand Greek myths first. Now, there were prose writers in those days. Charles Lamb, primarily known as John Elia by most of us, William Hazlitt, Thomas de Quincey, they were in fame in the Romantic period. Lamb was most lovable, honest, and humble. So, of all the writers, he was the most humble person. He never married because his sister was suffering from mental issues, health issues. She even tried killing her mother out of those mental fits. So Lamb did not marry because of her.
He had heroic struggles against all the misfortunes and odds of life. His poetry is his writings, his prose writings, a bit obscure, complex, but his writing style is great. Essays of Elia, which he writes impersonating himself as Elia, not as Lamb. Then Tales from Shakespeare, in which he gives a summary of the tales from Shakespearean plays. Last essay is written in 1833. Then Romantic fiction. So Romanticism also includes novels, fictions. So Gothic novels were developing. Gothic novels are the novels in which you use supernatural elements, the tales of mystery, of ghosts, of supernatural beings. So Mrs. Anne Radcliffe, she wrote 5 novels, and the mysteries of Udolpho and the Italian, they were her best works. Mary Shelley, like she was wife of Shelley, she wrote Frankenstein in 1818. Frankenstein is a story, you must be knowing that a person creates something and that thing is given life through science, and then it becomes hazardous for the creator. Matthew Gregory wrote The Monk, Tales of Terror, Tales of Wonder. So all these were based on supernatural elements, ghostly elements. Then comes Jane Austen. So Jane Austen was one of them whose stories are known as drawing room stories, because जो stories वो सुनाती है वो ऐसी हैं जिनको हम drawing room में बैठ के discuss करते हैं families को. तो इस तरह की इसकी stories हैं, because some critics said that she did not have much exposure to society. That is why she was writing in those style, क्योंकि इसका theme money, marriage इसके आसपास ही घूमता है. She did for novels what Lake District poets did for poetry. So she developed, she gave a new charm to the novel writing. उससे पहले जो novels थे, जो इससे पहले की एज में लिखे गए, उन्हें बहुत ज़्यादा reformation की ज़रूरत थी. उसमें बहुत ज़्यादा material ऐसा था which needed to be made sophisticated. So Austen wrote sophisticated novels. She used irony, humor, and the issues of the general public. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Persuasion, and Northanger Abbey. So ये जो इसके novels थे, ये basically उस social circle के आसपास घूमते हैं जिसको इसने closely देखा. Stories are almost same कि एक family है, उसमें कुछ बेटियां हैं जिसकी शादियां कराना लोगों के लिए जरूरी था. We know Proydus के दौर से ये चलता आ रहा था कि शादी नहीं होगी तो जायदाद नहीं मिलेगी. So parents were kind of really concerned about their daughters. तो ये पैसा और शादी इसके novels इसके आसपास हैं. Then Walter Scott was the last of them, the renowned one. So Walter Scott जो था, he was a writer जिसने इन issues के अलावा मजीद social issues को लिखा. But again, he made a reformation to the novels like Jane Austen. It's an Antiquary, The Mannering, The Abbot, Merriman, Old Mortality, The Bride of Lammermoor. So ये सारे इसके वो novels थे जो कि उस टाइम में लिखे गए जबकि novel को serious reformation की जरूरत थी. उससे पहले जो novels previous time में लिखे गए उनके अंदर काफी हद तक deterioration आ चुकी थी as far as the quality was concerned. So Austen and Walter Scott, they gave a new birth to the novel writing. So this was all about a romantic period or romantic age, which is also known as the age of revolutions.